Hello friends, myself Mukul. I am back with my new video which is on the topic of what we are expecting in this union budget, which is presented by our finance minister Nirmala Sitharaman on 1st of Feb 2021. So before we start, I would like to explain how this union budget will be prepared. So it will take 6 month time. This is not actual, this is approximately 6 month time to prepare. अब ये 6 मंथ कंज्यूम हुए कहाँ? मिनिस्ट्री के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. उस डिपार्टमेंट के अंदर जो ऑफिसर्स बैठे हुए होते हैं, इनकी रिकमेंडेशन ली जाती है. हर डिपार्टमेंट में सोचेगा कि यार हमारे पास मोटी अमाउंट आए, मैं अपने डिपार्टमेंट में इन्वेस्ट करूं और मैं अपने डिपार्टमेंट को ऊपर लेकर जाऊं. तो इन्हीं से रिकमेंडेशन ली जाती है. ये रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट में जाती है, देन ये फाइनेंस मिनिस्टर को जाती है, देन ओवरऑल ये बजट अपना फाइनल करते हैं इनकी रिकमेंडेशन को देखते हुए. सो मिनिस्ट्री के अंदर फ्रेंड बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं. सो अपार्ट फ्रॉम दैट डिपार्टमेंट देयर इज वन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. दिस डिपार्टमेंट विल फाइनलाइज द बजट अंडर आर्टिकल 112. फर्स्ट प्री बजट मीटिंग held by our finance minister with our top industrialists will be held on 14th of December, in which several decisions were taken place. The finalization of these decisions will be present on 1st of Feb itself. So friends, I am asking one question from you, is that what is the total amount of budget will be presented on this 1st of Feb? As per my opinion, the amount will be 30.42 lakhs crore. This will differ from person to person, but as per my opinion it's 30.42 lakhs crore. So I am explaining my expectation into our heads. As you all know, there are 5 heads in income tax: salary, house property, capital gain and deduction. Under salary head, I found that there should be 2 major changes in this union budget. First one is a range in the standard deduction for salary employees, that is under section 16 clause 1. Previously it was capped at 50,000, but what I am expecting, it should be increased by 25,000 and capped at 75,000. The reason behind is that जो न्यू स्लैब रेट है फ्रेंड्स, उसके अंदर बहुत से अलाउंसेस ऐसे हैं जो डिडक्शन के लिए अलाउड नहीं है, बट इन ओल्ड रिजीम दिस शुड बी अलाउड एज डिडक्शन. दैट्स व्हाई आई रिकमेंड टू आवर फाइनेंस मिनिस्टर वन मोर अलाउंस नेम्ड एज वर्क फ्रॉम होम कंसेशन, which has to be totally exempt under the head house property. These 2 major changes have to be included in this budget. First one, increase in the deduction limit of interest paid on house property, that is under section 24B. Previously the cap amount is rupees 2 lakh, but this time this amount have to be 4 lakh. The reason behind this is that this will boost up the investment in the housing property. And the second one is deduction for self occupied house property, that is those property which are not let out. The lacking point in this is that the owner of the house property does not take deduction for their repair, for the charges paid on repair and maintenance. So this is one recommendation from my side to our finance minister to allow this charge as deduction under the head house property. Under the head capital gain, these 2 major changes are expecting in this union budget. First one is overall of capital gain reporting. As you all know, capital gain is divided into 2 parts, short term and long term. अगर long term है, अगर आपने STT पेड किया है तो आपका इतना टैक्स रेट है, STT नहीं पेड किया तो इतना है, एंड शॉर्ट टर्म में अगर इतना है तो इतना है. In clear cut, what I am expecting is in this budget, this will simplify, the compliance is simplified under this respective head. And the second one is future and option, that is F&O. हमारा इनकम टैक्स लॉ ही कंफ्यूज है कि इसकी इनकम PGBP में कंप्यूट करें या कैपिटल गेन में कंप्यूट करें. प्रीवियस कुछ ईयर्स में मैं देखता आ रहा हूं
कि नोटिसेस आ रहे हैं कि आपने गलत हेड में अपनी इनकम कंप्यूट करी है. सो दीज टू मेजर चेंजेस आई एम एक्सपेक्टिंग इन दिस यूनियन बजट. 3 major recommendation under deduction is: first, 80C, 80CCC, 80CCD1. The cap amount of these three sections currently is 1.5 lakh, which has to be increased to 2 lakh rupees. Second, 80D, medical insurance. The cap amount currently for medical insurance is 25,000 and 30,000 as the case may be. But apart from this, one recommendation from my side is to include expenses incurred on COVID as well under this section. And third, 80DDB. This section is for the patient who was suffering from cancer, AIDS, etc. There is one recommendation in this section to include COVID-19 hospitalization in this to take benefit of this section. So friends, for these respective topics I had prepared one file which I am sharing, which I am attaching in this video. First one, COVID-19 cess. As you all know, 2 to 4% cess will be imposed on higher section of earners. Second, income tax slab rate. थर्ड, टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन ऑफ ओल्ड वर्सेस न्यू रिजीम. अगर हम सैलरीड पर्सन है तो हमें एम्प्लॉयर को कब बताना है कि हमें ओल्ड स्लैब रेट फॉलो करने हैं, न्यू करने हैं, क्योंकि हमारे को जो हमारा स्लैब रेट है उसके अंदर ऑप्शन दिया गया है कि आप ओल्ड में कंटिन्यू करना चाहते हो या आप न्यू में आना चाहते हो. अगर आप न्यू में आना चाहते हो तो उसमें कुछ अलाउंसेज हैं, अप्रॉक्स 70 अलाउंसेज हैं विच आई एम शेयरिंग इन माई फाइल. उसमें कौन कौन से पहले एग्जेम्प्ट हुआ करते थे, अब वो टैक्सेबल हैं. एंड फोर्थ, न्यू टैक्स रिजीम स्लैब रेट फॉर डोमेस्टिक कंपनीज. सो हेयर आई एम फिनिशिंग माई वीडियो. Thank you so much for giving your time. Thank you.